वेलकम टू बिटू नेट कोड चैनल। गाइस, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। गाइस, दिस इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, अ वेरी वास्ट टॉपिक, सो आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, सो प्लीज़ कोऑपरेट। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में आज हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एंड what are the advantages and disadvantages of using spanning tree protocol in our domain. Guys, as we know that we often create redundant paths in our network, in our LAN network, for switches to provide backup in case of link failure or port down issues or any cabling issue with the switch. Right, and in production scenarios, we cannot afford a network to go down even for a second. So that's why we always create a redundant paths to switches, multiple paths. In such a case, a device MAC address can be learned from multiple ports that can cause making frames rotate in a network endlessly, consuming all the network bandwidth and hog the network. So redundancy is giving us benefit, but at the same time it is creating a problem for us because one MAC address is learned by a switch from different parts, right? So that is not good for our network. So in such situations, STP comes to the rescue. STP means spanning tree protocol. Spanning tree protocol, it is enabled by default on all Cisco switches, and it's IEEE 802.1d standard. A few other types of STP versions that we use in our networks are PVST, RSTP, RPVST, MST. Right, PVST stands for per VLAN STP that runs on Cisco switches by default, and rapid RSTP is a rapid STP, that is it is IEEE 802.1W standard, and by it converges very rapidly in LAN, right, in case of any link failure, because by default uplink fast and backbone fast are enabled in RSTP protocol. In RSTP protocol, the only stages that are there are discard, learning forwarding, and only two stages are there. Listening stage is skipped, right? That's why the convergence of RSTP protocol is very fast. तो हम ये अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट एंड ये स्टेजेस एसटीपी की स्टेजेस अभी डिस्कस करेंगे इसी सेशन में. So next type kind of STP version that we have is RPVST, that stands for Rapid Per VLAN STP. Right. Another version of STP is MSTP, that is multi STP, and this is IEEE 802.2 standard. Guys, STP works in two modes, per VLAN per instance where load balancing is present, and all VLAN single instance where no load balancing is there. Guys, before we discuss in detail about what is STP and how things happen in STP, there will be few terms that will be discussed repeatedly. So I will discuss those terms with you all before going in depth in STP. So first is called, you will hear a term often as BPDU. BPDU stands for Bridge Protocol Data Unit, right? These are the messages that are used by STP for the information exchange. Another term that you will hear is bridge ID. Bridge ID, it is used for route bridge election. Bridge ID is combination of priority value of a route and MAC address. Priority of a switch can be from 0 to 61440 plus VLAN ID, that is extended system ID. Default priority of every switch is 32768, right? And priority always increases or decreases in multiples of 4096. So maximum priority that we can give to any switch is 61440. So and
the maximum VLANs that we can have is 4096. So 61440 plus 4096 become 65535. That is the maximum bridge ID any bridge can have. So for VLAN 1, the bridge ID will always be 327. I'm sorry, I wrote a 718. This is 768. 768 plus 1 for VLAN 1. It will always be 32769. And then you will hear term as root bridge. Root bridge will always be the leader root in the domain that will always share all the STP information with other switches. And root bridge can be primary root bridge and it can be secondary root bridge. For redundancy purpose, we can configure a good hardware configuration switch as a primary root bridge, or depending upon its location in network, right? And then we can also configure a secondary root bridge. Then another term we hear is a root port. What is root port? Root port is the way to reach any bridge, right? Every switch must configure one port as a dedicated path to reach the root bridge. So that path we will call as a root port. And every switch must have at least one root port that connects that switch to root bridge. And then we see DP. DP is stands for a designated port. It always forwards BPDUs. Its responsibility is to forward BPDUs always, right? And then there are called NDPs. NDPs are non-designated ports. They always stay in block mode. They never forward the BPDUs but always receive BPDUs. Right. So when because the loop stops in the network only because a few ports go in NDP stage, that is blocked state. तो इसी का रीजन होता है कि हमारे नेटवर्क में लूप नहीं बनता बिकॉज कुछ पोर्ट्स को हम ब्लॉक कर देते हैं सो देयर इज ऑलवेज वन पाथ टू सेंड और रिसीव द डेटा सेंड और रिसीव द फ्रेम्स root bridge takes all decisions in spanning tree protocol because root bridge is the leader of the domain, so the responsibility of sharing all the messages with other switches is with root bridge. And guys, how the root bridge selection is done, ये भी हम देखेंगे. Switch with minimum bridge ID becomes the root bridge. तो इलेक्शन प्रोसेस से पहले हम कुछ और टर्म्स देख लेते हैं. ये बीपीडीओ अभी हमने डिस्कस करा ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट ये दो तरह की होती हैं वन इज कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू द बीपीडीयू दैट इज शेयर्ड टू share the configuration and other is TCN BPDU that is shared only when there is topology change notification in the network like in case any switch port goes down or any switch burns up or any other issue occurs, then only this TCN BPDU is generated. Guys, and STP automatically manages the election of a root bridge in the network, but we can also manually change it. We can alter it if we want, right? Depending upon the configuration of a switch we have, we can decide, or depending upon the kind of network we have, we can decide that which switch we want to take the extra responsibility of handling the STP traffic. So we do that by changing the priority. एंड whenever we मैं आपको ये सिस्को पैकेट ट्रेसर में दिखा देता हूँ ये मैंने चार स्विचेस लिए हैं दिस इज स्विच 1 and this is switch 2 this is switch 3 and this is switch 4 and अभी मैंने इस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है and by default this STP has selected this switch as the root switch because we can see that इसके सारे ports green हैं right so they are all designated ports this DP stands for designated ports so these ports are sending BPDUs
सो दिस इज द रूट ब्रिज। इसका कोई भी पोर्ट ब्लॉक्ड नहीं है, राइट। तो हम जो डेजिग्नेटेड पोर्ट के सामने वाला पोर्ट होगा, राइट, दैट विल आइदर बी रूट पोर्ट और इट विल बी इन ब्लॉक्ड स्टेज। क्योंकि ब्लॉक में होगा तभी हम लूप को कंट्रोल करेंगे। तो हम देख सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें S3 के, तो इसके सामने DP के सामने RP होगा। एक RP है, ग्रीन है, तो दूसरा ऑरेंज है, दैट मीन्स इट इज ब्लॉक्ड। सो ये इसका पोर्ट ब्लॉक्ड है। तो ये मिडल में देखें, ये मिडल वाले दोनों ग्रीन है, और इसके ऑपोजिट वाला एक ग्रीन है और एक orange है, right? So the green one, that means it is root port. This because this is the only path for this S1 switch to reach to root bridge. और इसका दूसरे वाला पोर्ट ब्लॉक्ड है, तो दिस इज इन ऑरेंज कलर। तो इस साइड हम देखें, इसका एक ग्रीन है और एक ऑरेंज है, सो दैट मीन्स वन ग्रीन वन इज रूट पोर्ट and orange one is blocked. So this way STP, this configuration STP has done automatically. STP has selected this bridge as root bridge. तो हम अभी डेमो करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम how we can change, how we can decide in case we want to make any other bridge as root bridge। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हम पोर्ट भी चेंज करने की कोशिश करेंगे कि हम कौन सा पोर्ट हमें रूट पोर्ट बनाना चाहते हैं। तो कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं हम। ये हमने अभी डिस्कस किया, हमने अभी देखा कि वेज टू आइडेंटिफाई रूट ब्रिज इज इफ देयर इज नो रूट पोर्ट ऑन ब्रिज देन इट इज डेफिनेटली रूट ब्रिज। ये हम अभी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में चेक करेंगे। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना इफ़ यू नीड टू। गाइज हम यहाँ पे देखते हैं, वन स्विच कैन मेक टू आरपीस बट फॉर डिफरेंट वी लैन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हर एक स्विच के पास कितने रूट पोर्ट्स हैं। लेट्स टेक दिस स्विच S2 स्विच, राइट। इसका रूट पोर्ट एक है, राइट। इस डोमेन में एक ही वी लैन है, तो एक ही रूट ब्रिज है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि इसका ये ब्लॉक्ड है और ये ब्लॉक्ड है, राइट। और ये इसका रूट पोर्ट है, दिस वन। तो इसके ये जो बीच वाले हैं, ये होंगे डेजिग्नेटेड पोर्ट। आई फॉरगॉट टू मेंशन इट हियर, लेट मी टाइप DP। ये हम स्विच की कॉन्फ़िगरेशन सिस्को में पैकेट ट्रेसर में आपको खोल के भी दिखाऊंगा, राइट। तो हम उसके बाद इस स्विच पे आ जाते हैं। तो रूट ब्रिज तक जाने के लिए लेट्स सी हाउ मेनी पाथ्स इट हैज। दिस path is blocked, right, and this path is green. So opposite to DP will always be root port and other port will be blocked। ठीक है, तो इस साइड अगर हम देखें इस स्विच के इस साइड, ये दोनों ब्लॉक हैं, तो ये DP है, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स है। और इस साइड भी ये दोनों ब्लॉक हैं, तो ये डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हुए दो। और अब हम इस स्विच पे आ जाते हैं, स्विच 4 पे। इसके ये ब्लॉक्ड है पोर्ट्स, ये भी ब्लॉक्ड है, ये भी ब्लॉक है, सिर्फ एक पोर्ट ग्रीन है। दिस वे लूप हैज बीन कंट्रोल्ड, लूप हैज बीन स्टॉप्ड। तो पोर्ट ऑपोजिट टू DP विल ऑलवेज बी रूट पोर्ट, राइट। तो ये है डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो STP ने ऑटोमेटिकली करी हुई है। फ्यू मोर पॉइंट्स लेट्स डिस्कस। path cost is decided on basis of bandwidth, right। तो ये bandwidth for fast ethernet bandwidth 19 मानी जाती है। सो ये हम देखेंगे। and second root port decided is decided on lowest sender bridge ID from neighbor। third is decided on lower port priority from neighbor। by default port priority is 128 प्लस पोर्ट नंबर। ये भी मैं आपको शो करूंगा डेमो में। पहले हम सारी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे।
If path cost is same for two paths, suppose then sender bridge ID is checked. Sender bridge ID is also called non-bridge ID. If tie up in sender bridge ID, then next port priority is checked on basis of port ID with lower port ID is select. जैसे इस स्विच से हमारे दोनों ईथरनेट है सपोज, तो दोनों की कॉस्ट सेम होगी, तो इसमें से जिसका पोर्ट आईडी कम होगा that will be selected as root port. Similarly for other switches also. तो अभी इलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, रूट ब्रिज कैसे इलेक्ट होता है एसटीपी में. ऑल स्विचेस कंसिडर देमसेल्फ नॉन रूट ब्रिज इनिशियली. जब हम स्विचेस स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी गिव कनेक्टिविटी टू स्विचेस, देन स्टार्टिंग में सभी स्विच अपने आप को नॉन ब्रिज एज्यूम करते हैं. उसके बाद स्विच चेक द ब्रिज आईडी ऑफ इट्स नेबर, right? If the bridge ID of its neighbor is lower or higher, अगर higher है, then switch will say that I am root bridge because my bridge ID is lower than you, right? और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पोर्ट ऑपोजिट टू डीपी इज आरपी दैट हैज द मिनिमम पोर्ट आईडी. अदर ऑपोजिट पोर्ट ऑफ टू डीपी इज ब्लॉक्ड. ये हमने अभी देखा कि डीपी के ऑपोजिट जो भी पोर्ट्स होंगे, राइट, इस स्विच की तरफ देख लेते हैं. ये डीपी के ऑपोजिट पोर्ट आरपी, ठीक है ना, लेसर पोर्ट आईडी वाला, और दूसरा डीपी कनेक्शन है उसके ऑपोजिट वाला फिर ब्लॉक हो जाएगा. सिमिलरली इस कंडीशन में भी ऐसे ही ब्लॉक हुआ, एक पाथ मिला कम पोर्ट नंबर वाला आरपी बन गया, और हायर पोर्ट नंबर वाला ब्लॉक हो गया. ऐसे ही इस साइड कम पोर्ट आईडी वाला आरपी बन गया और ज़्यादा वाला ब्लॉक हो गया. लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट. तो एस टी पी टाइमर्स भी हमें पता होना चाहिए, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ एस टी पी टाइमर्स ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड about the convergence mechanism and these port states. I'm sorry, RTP, STP versions, right? So, by default, STP sends hello timer to its neighbor switches every 2 seconds, and every max age time is 20 seconds, and forward delay is 15 seconds into 2, in which 15 into 2 is equal to 30 seconds, out of which listening में 50 seconds consume होते हैं और learning में 15 seconds consume होते हैं. So total convergence time of a switch when it links goes down and then it comes up, or it is up then it goes down, total convergence time इसको लग जाता है 52 seconds. That is 2 seconds for hello 2 seconds तक नहीं आई, then it will wait for another 20 seconds कि whether switch is present or not. अगर स्विच प्रेजेंट नहीं हुआ, राइट, देन इट विल ट्राई टू चेंज इट्स configuration it data, and it will try to listen and learn the new root bridge ID or path to the next root bridge that can be present in the environment. And guys, ये configuration BPDUs are sent every 2 seconds. Configuration BPDUs, ये यही हमने जो डिस्कस किया था, they are also sent every 2 seconds. Now these are the STP port states. First is disabled. In case switch is power off or shut down, or the port is shut down, then the port STP port state will be disabled. Blocking state is 20 seconds. Listening, it listens to the messages for 15 seconds, and then it learns the MAC address 15 seconds. तो आरपी टू डीपी इलेक्शन इस स्टेज में हो जाता है लर्निंग तक, राइट. उसके बाद ये इलेक्शन हो गया रूट ब्रिज का, रूट पोर्ट्स का, तो उसके बाद ये फॉरवर्डिंग में आ जाता है 50 सेकेंड्स के बाद, जब व्हेन इट स्टार्ट्स शेयरिंग BPDUs with neighboring switches. गाइस, तो उसके बाद एस टी पी कन्वर्जेंस मैकेनिज्म
को भी के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए हम ये कमांड्स यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट इज पोर्ट फास्ट। ये पोर्ट फास्ट एक हमारी कमांड होती है जो हम रन करते हैं on only on those ports that are connected to end devices like PCs, servers and printers, क्योंकि इन मशीन डिवाइसेस से BPDUs आर नॉट एक्सपेक्टेड। सो लूप बनने का चांस इन डिवाइसेस से नहीं होता, राइट। तो इस पोर्ट फास्ट को हम यूज़ करते हैं कन्वर्जेंस टाइम रिड्यूस करने। फॉर एग्जांपल अगर कोई पीसी है, पीसी इज trying to connect to PC has been switched on and it is trying to connect to DHCP server to obtain the IP address। तो अगर 50 सेकेंड्स STP कन्वर्जेंस में ले रहा है, राइट, तो इतने में ये पीसी का DHCP सर्वर से IP एड्रेस टाइम आउट हो जाएगा एंड इट वोंट बी एबल टू गेट द IP एड्रेस। सो दिस विल नेवर गेट IP एड्रेस फ्रॉम द DHCP सर्वर। तो इस काइंड की सिचुएशंस में हम पोर्ट फास्ट इनेबल करके रखते हैं ऑन द ऑल द स्विचेस दैट आर कनेक्टेड टू एक्सेस लेयर। तो ये सिस्को का हमारा सिस्को हायरार्की केवल मॉडल होता है दैट इज उसमें सबसे ऊपर कोर लेयर होती है, देन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, देन देयर इज एक्सेस लेयर। एक्सेस लेयर के साथ हम एंड डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे हम अपने एक्सेस लिस्ट फायरवॉल्स पॉलिसीज वगैरह अप्लाई करते हैं। तो जो कोर लेयर होती है दैट इज़ द बैकबोन लेयर। तो उसमें उसको हम बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन स्विचेस को कोर लेयर में डालते हैं बिकॉज दे हैव टू बी वेरी फास्ट इन ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम वन प्लेस वन स्विच टू अदर। Guys, then we have uplink fast। uplink fast भी हम एक्सेस लेयर स्विचेस एक्सेस लेयर स्विचेस जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस से कनेक्ट करते हैं, राइट। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस पे यूज़ करते हैं ताकि कन्वर्जेंस टाइम कम हो सके, दैट इज टेकन बाय एसटीपी टू कम फ्रॉम डाउन टू एंड अप टू डाउन स्टेट। तो उसके बाद हमारा आ जाता है बी बैकबोन फास्ट। इट शुड बी इनेबल्ड ऑन कोर लेयर ऑफ स्विचेस क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। वी कैन नॉट इवन अफोर्ड द डिले ऑफ फ्यू सेकेंड्स ऑन कोर लेयर स्विचेस, राइट। सो रूट ब्रिजेस हम नॉर्मली कोर लेयर के स्विचेस को बनाते हैं एंड इन केस इनडायरेक्ट फेलियर टू रूट ब्रिज हैपन्स तो root bridge will send inferior BPDU to blocked port and it will become active immediately for BPDU change। तो इस मैंने अभी आपको बताया था कि अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होते हैं जो हमारा रैपिड एसटीबी होता है, राइट। दिस इज़ द रीज़न क्योंकि इनका कन्वर्जेंस टाइम बहुत कम होता है। इसमें लिसनिंग स्टेज स्किप हो जाती है और ये डिस्कार्ड से सीधा लर्निंग और फॉरवर्डिंग में आ जाता है। तो गाइज दिस वाज द थ्योरी दैट वी डिस्कस्ड अबाउट एसटीपी। तो अभी हम इसका थोड़ा सा हम पैकेट ट्रेसर में देख लेते हैं। सबसे पहले हम रूट ब्रिज पे चलते हैं। Let's use this command show spanning tree। सो यहाँ पे हमें रूट आईडी दिखा रखा है 32769। आई टोल्ड यू के रूट आईडी इज द प्रायोरिटी प्लस वन फॉर VLAN 1। प्रायोरिटी स्विच किए 32768 क्योंकि ये VLAN 1 का पार्ट है तो इसमें वन ऐड करके 32769 होगी एंड दिस इज द बेस एड्रेस ऑफ द switch, right, and it says this bridge is the root, right। ये भी हमें यहाँ पे मैसेज आ गया। उसके बाद हम अगर नीचे इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन देखें, इंटरफेस का स्टेटस, तो वो हमें सभी डेजिग्नेटेड पोर्ट्स दिख रहे हैं। डेजिग्नेटेड रोल इज डेजिग्नेटेड एंड स्टेटस इज फॉरवर्डिंग, दे आर ऑल इन फॉरवर्डिंग स्टेज। तो कॉस्ट क्योंकि ये फास्ट इथरनेट कनेक्शन है, कॉस्ट सभी की 119 है, राइट। तो गाइज इसमें हमने प्रायोरिटी भी देखा था।
प्रायोरिटी सबसे कम प्रायोरिटी है। वैसे तो ब्रिज रूट ब्रिज के सभी पोर्ट्स फॉरवर्डिंग स्टेज में ही होते हैं। तो प्रायोरिटी अगर हम देखेंगे, प्रायोरिटी हम कैसे निकालते हैं, 128 इज द डिफॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ द पोर्ट्स। तो जिसका पोर्ट आईडी सबसे कम है उसका प्रायोरिटी भी सबसे कम होगी, राइट। तो ये नॉन ब्रिज स्विचेस पे हमें इसकी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो गाइज अभी नेक्स्ट स्विच पे चलते हैं हम। लेट्स गो टू आफ्टर S3 S2। S2 के हमारे तीन पोर्ट्स ब्लॉक हैं और दो DP एंड एक RP है। तो अभी चेक कर लेते हैं हम। So we can see here that F01 is root port, right? So root port, that means this one is F01. F2 is blocked. This is blocked. F3 is blocked and F4 is also blocked, right? F6 and F5, F5, 6 are, these are designated ports. They are in forwarding status. तो यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी भी हम देख सकते हैं। वन फास्ट ईथरनेट तो कॉस्ट हमारी आ रही है कनेक्शन की 19 और 128 फॉर ऑल एंड डॉट के बाद जो नंबर आता है वो पोर्ट आईडी के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो नाउ लेट्स गो टू स्विच S1। तो गाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके भी ओनली वन रूट पोर्ट। हर एक स्विच पे सिर्फ एक ही रूट पोर्ट होगा, दैट विल बी द यूनिक पाथ टू रीच टू द रूट ब्रिज। बाकी या तो डेजिग्नेटेड होंगे या ब्लॉकिंग स्टेज में होंगे। सो ब्लॉकिंग स्टेज वाले जो होते हैं पास, दे हेल्प अस टू कंट्रोल द लूप, स्टॉप द लूप। ऐसे ही भी हम चलते हैं लास्ट स्विच पे, दैट इज S4। तो ये हम देख सकते हैं दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्विच। तो इसका सिर्फ एक ही पोर्ट है दैट इज इन फॉरवर्डिंग स्टेज, रेस्ट ऑल आर ब्लॉक्ड। So this way spanning tree protocol has control looping in our this switching environment. Guys, now I want के इसमें S1 को मैं रूट ब्रिज बनाना चाहता हूँ। So let me drag it here. So how I will do that? MAC address we cannot change, right? So only option we have available to change the to make it root bridge is the priority. So how we'll do that? Let's try that. Config terminal. Since we have only one VLAN here, so we will use spanning tree VLAN 1। तो अभी हम इसकी it says set the bridge priority for the spanning tree और वी कैन यूज कॉन्फ़िगर स्विच एज अ रूट, राइट। हम ये भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं। सो वील यूज प्रायोरिटी कमांड। तो इसकी हम प्रायोरिटी अभी यहाँ से देंगे, इट कैन बी फ्रॉम 0 टू 61440। लेट्स ट्राई टू गिव इट। हम 0 के बाद हम 1 2 3 या कोई नहीं दे सकते, इट शुड बी इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 4096 because I assume that this is the highest configuration switch available to me. So this switch should always be elected as root bridge। तो इसकी मैं प्रायोरिटी दे देता हूँ 4096। Let's see तो ये आप देख सकते हैं दिस इज इन लिसनिंग स्टेज। इसके सभी पोर्ट्स अभी फॉरवर्डिंग स्टेज में चले जाएंगे। लेट्स गिव दिस कमांड वंस अगेन। नाउ इट इज इन लर्निंग स्टेज।
So convergence is going on in by STP. Let's give it commands one. Now this port is in forwarding stage. Okay, so now we can see that. Let's give it once more. Now we have message that this bridge is the root bridge, right? It has priority 4096. I gave it priority as 4096 and plus 1 for VLAN 1 becomes 4097. तो अभी बाकी switches सभी configuration change हो चुके, तो you can ignore the labels I have given here. तो अभी हम इसके सभी ग्रीन हो चुके हैं S1 के, तो बाकियों के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे. So let's not focus on the labels given here. Let us go to S2 switch. Show spanning tree. Now we can see that it has ports in forwarding blocking, right? And only one is root. Let's go to switch 3.1. Here also only one root forwarding, rest are blocking stage. And let's check switch 3. One root port and others are DPs or designated. DPs or blocked. All are in forwarding and only one is blocked. So loop has been controlled in this. So guys, this was our video about STP. तो let me know आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, and please subscribe to the channel, and don't forget to like it and hit a notification bell. Thank you for watching this video.